Hello everyone, my name is Ashraf Lodhi and I am Alumni Outreach Officer, PUAN Punjab. With me, I have my colleague, Ms. Mushat Sultana and Ms. Madhya Komal. So today we are going to have a session on the procedures and requirements that are for applying the Alumni Small Grant. As we all know that the cycle has started for the Alumni Small Grant, and most of our alumni have some queries and some issues regarding apply for the small grants. So this is one good chance for all of you to attend the session and learn the technicalities, financial, and of course, the digital technicalities of applying for a small grant. So as we know that we have two types of small grants. One is open theme and one is special theme under the US mission in Pakistan. So the open themes are the themes that the alumni apply on the topics that are in the interest of their communities and for the betterment of their society, but in collaboration and in parallel to the US mission goals in Pakistan. The open themes are basically the themes in which the funding, that is the upper limit for the funding is 500,000, means 5 लाख रुपए की जो है आपको funding मिलती है to conduct an ASG in your community. और जो special themes हैं वो themes वो होती हैं जो mission जो होता है US mission that basically shares with the audience that we want the small grant on the special themes. कुछ भी हो सकती हैं, the need of time, it could be climate change, it could be something that addresses the very common problem or the problem that is being a regular problem जो हमारी society में आजकल चल रहा होता है. और जो special theme है उसके लिए जो funding होती है वो 10 लाख होती है, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस, और ये ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग इफ देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल और उसको जो है कॉन्सुलेट या एम्बेसी उसको टेक ओवर करके उस पर सपोर्ट करना चाहते हैं. So without wasting any time, moving forward, so I'll start with Madhya. Madhya, if you can just share your screen और आप हमारे ऑडियंस को बता दो कि किस तरह से टेक्निकली जो है MIS जो है MIS पे जो MIS हम कहते हैं ये पोर्टल कहते हैं. There are two words जो मैं अपने alumni को बताता चलूँ that are being commonly used. जो MIS और पोर्टल एक ही चीज़ है जो हमारा IT डेटाबेस है जिसके ऊपर जो है वो जो आप अप्लाई कर सकते हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और मादिया इस बारे में आपको बताएंगी. सो ओवर टू यू मादिया. Thank you, Ashraf. Let me share my screen first. Is it visible to everyone? Yes, Madhya, go ahead. Yes, Madhya, this is visible. Before you start, I'm sorry, मैं सबको बताता चलूँ कि किसी को भी कोई question हो किसी चीज़ से भी related, I would request everyone to write their question in the comment box. We'll pick it from there और हम वहाँ से जो भी आपके सवाल होंगे हम उनके जवाब देंगे साथ साथ during the live. Thank you. Okay, thank you, Ashraf. Assalamu alaikum everyone. This is Madhya, IT developer at USAFP PUAN office. This is our basically alumni registration portal. जब हम एक वेबसाइट की फ्रंट एंड वेबसाइट की बात करते हैं तो हम उसको रजिस्ट्रेशन पोर्टल या एक वेबसाइट कहते हैं, नॉट MIS. तो आप जब भी इसके लिए एक वर्ड यूज करें तो पोर्टल या वेबसाइट का वर्ड यूज करें, ठीक है. दूसरा ये कि बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन फॉर्मली अबाउट alumni small grant proposal steps, I would like to talk a little bit about the PUAN login and sign up and forgot password options. First, मैं पहले इसको क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज info@puan.pk पे भी आती रहती हैं कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, हमारा forgot password किया, ईमेल नहीं आई और पासवर्ड रिट्रीव नहीं हो रहा या साइन अप कैसे करें, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ. The URL of our registration portal is www.puan.pk/alumni registration. जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो this is the page that appears. This is the home page of our portal. इसमें एक लॉगिन पैनल आपको नजर आ रहा है, ठीक है. There is a login panel, a forgot password option and a sign up button at the right corner of the screen. ठीक है. Those who are verified alumni, registered alumni, they can simply use their registered email address and password and log into their account and apply for the different opportunities. In case if you forgot your password, you can click on the forgot password link. In my next slide, I will show you a forgot password page, how it looks like and how you can use it. You can use this option to retrieve your password. System will send a password in your mailbox and you can pick that password and use it for the login and apply for the opportunities. Those who are new users, newly graduated alumni,
Sign up button is for those alumni. They can use that button and they can get registered with PUAN, and after that they can apply for our opportunities. So on the left side of the screen, there is a forgot password page, and on the right hand side of my screen, there is a sign up page. So first I will talk about a forgot password page. There is a text field. आपने यहाँ पे अपना registered email ID enter करना है and click on the get login key button at the bottom, and then system will send you the login key in your mailbox. Simple one step एक process है जिससे आप अपना password retrieve कर सकते हैं और अपनी email को जो है अपने password को जो है वो get कर सकते हैं. In case आपको नहीं आता, write us your query at info@pon.pk and we will reply you and deal with your case. On the right hand side of my screen, there is a sign up page. Sign up उन alumni के लिए है जिन्होंने अभी तक हमारे PUAN alumni network के साथ Pakistan-U.S alumni network के साथ register नहीं किया. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यूली ग्रेजुएटेड alumni हैं और आप PUAN के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द साइन अप बटन. This page will appear. Write your email address that you used while you were going on your exchange program. For example, आप एक global UGRAD alumnus या alumna हैं, तो आपने यहाँ पे वो email address डालना है जो आपने USCFP के साथ correspondence के वक्त use की थी email address. जब आप global UGRAD पे जा रहे थे या Fulbright पे जा रहे थे या Humphrey पे जा रहे थे, आप वापस आए, आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, वो हमारे पास डेटाबेस में नहीं होगा. ठीक है, हम उसी ईमेल एड्रेस से आपको जानते हैं जो आपने उस वक्त यूज किया था अपने एक्सचेंज प्रोग्राम को अटेंड करते वक्त. वी कलेक्ट योर डेटा फ्रॉम द पार्टनर्स, वी अपलोड दैट डेटा इन आवर डेटाबेस, इन PUAN डेटाबेस, एंड देन व्हेन यू कम फॉर द साइन अप और दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आपका डेटा क्रॉस चेक होता है जो हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है. अगर वो डेटा मैच करता है तो सिस्टम गिव्स यू अ सक्सेस मैसेज एंड सेंड्स यू अ ईमेल, कांग्रेचुलेशंस ईमेल कि आप हमारे वेरीफाइड alumni हैं और आपको लॉगिन की जो होती है वो आपके मेल बॉक्स में आ जाती है. इन केस योर डेटा डज नॉट मैचेस विद आवर रिकॉर्ड्स, तो सिस्टम थ्रोज एन एरर मैसेज और आपको साइन अप के पेज पे ये एरर मैसेज आ जाता है कि ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट और इनवैलिड ईमेल एड्रेस और दिस काइंड ऑफ मैसेज. So in this case, you can click on the Cont sign up link appearing at the bottom and fill out a new registration form. That is a lengthy registration form. Send your new registration request. That registration request will directly go to your chapter coordinator, and on his or her approval, you will become a registered verified member. So I think this is all clear. और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप info@pon.pk पे इसको डिस्कस कर सकते हैं. ये प्रोसेस है साइन अप का और लॉगिन का सारा. ठीक है, आपने साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लिया. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लॉगिन. So if you are going to apply for the small grant opportunity, click on Alumni Small Grant tab from the left menu, and Alumni Small Grant application form will start. The first screen that appears is the introduction page. Here you can see a brief introduction about Alumni Small Grant program, the budget limits of open topics and special themes, and other program related information. Click on Grant General Guideline Document button at the bottom and proceed. By clicking on this button, terms and conditions appear. Read these terms and conditions very carefully. Click on the acknowledgement checkbox and finally click on apply button to start Alumni Small Grant proposal steps. Alumni Small Grant proposal application basically consists of 10 steps, from updating your personal information to academic information, work information till project submission. So all these steps are mandatory. You need to update and fill in the data in all steps. You will complete the application step by step. My colleague Mushfat will tell you in detail the details of each step, and I will cover the technical part. Over to you, Mushfat. Thank you, Madhya. Thank you for the overview. This is Mushfat. I'm from finance section of PUAN Pakistan-U.S Alumni Network. Let's go through these steps one by one.
In the first step, you will update or edit your personal information. Next, and here you can also edit and update your academic information. And in third steps, next please, you can edit and update your work information. And the fourth step is previous PUAN activities. If you ever taken part in any alumni small grant or chapter activities, you have to enter the details here. And in step fifth, Madhya, next, project descriptions. So this step fifth is detailed. It's all about project. Here you have to write down your project theme, your target region, your project title, your start and end date, and you can see on the screen all other details. Next slide. Yes. I just want to add something here. यहाँ पे कुछ फील्ड्स जो हैं वो ड्रॉप डाउन है, कुछ फील्ड्स टेक्सचुअल हैं, कुछ फील्ड्स न्यूमेरिक हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइप की फील्ड जो है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ द ऑप्शन. और बी केयरफुल अबाउट द डेट्स. आपकी स्टार्ट डेट मस्ट बी लेस देन द एंड डेट. आगे की डेट होनी चाहिए एंड डेट. आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है इन टर्म्स ऑफ वीक्स होना चाहिए. और ये न्यूमेरिक फील्ड है. System won't let you to enter textual data like 12 weeks. No, बस आप अपने digit add करें 12 और 10 और 8 जो भी हैं. Project title is a text field. It is mandatory और आपको add करना जरूरी है. अभी ये step complete नहीं हुआ. इसके नीचे open ended questions हैं और उसमें भी आपने limit का खास ख्याल करना है कि within limit आपका answer जो है वो बहुत brief होना चाहिए. Thank you, Madhya, for explanation. Furthermore, in the next fifth step, project description, we have project summary. In this, you will give general idea about your project, then project justification, your need, and your reason why you are doing your project. Then next is methodology. Here you have to write all your justifications in your Dropbox, right, Madhya? Yes, Mushfat. And one thing more. फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है एग्जीक्यूटिव समरी. आप ये प्लस के सिंबल को क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूटिव समरी में आपने ऐड क्या करना है, उसमें क्या आपका आंसर होना चाहिए, उसकी डिटेल भी आपको बताई हुई है कि आपने किस किस्म का आपका आंसर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेथोडोलॉजी का देखें तो प्लस के साइन पे क्लिक किया हुआ है जिससे वो नजर आ रहा है कि आपने मेथोडोलॉजी में क्या बताना है. ठीक है. इस तरह प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन में भी आपको नजर आ रहा है कि हम आपसे प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन में एक्चुअली क्या मांग रहे हैं. करेक्टर लिमिट ये वर्ड लिमिट नहीं है. स्पेस इज अ करेक्टर, फुल स्टॉप इज अ करेक्टर, कॉमा इज अ करेक्टर, सेमीकोलन इज अ करेक्टर. तो आपने अपना आंसर बहुत ब्रीफ और टू द पॉइंट देना है आंसर. अदरवाइज सिस्टम में एरर आएंगे, आपका आंसर सेव नहीं होगा, स्टेप का जो पूरा स्टेप है वो भी सेव नहीं होगा. तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं. जैसा प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको बताया हुआ है कि आपने क्या आंसर में लिखना है और आपको मैक्सिमम लिमिट भी बताई है और नीचे काउंटर भी चल रहा है कि आपके कितने रिमेनिंग कैरेक्टर्स रह गए हैं. सो दैट्स इट अबाउट स्टेप 5. So starting from methodology, in methodology you have to explain how you are going to plan, manage and execute your project. Project goals and objectives should be aligned with your US mission. And next please, Madhya. Next we have goals and objectives. After that we have project deliverables. What are the outcomes? And media outreach plan. Your media outreach plan, it could be conventional, it could be electronic, you can use social media. Furthermore, branding plan. And in your branding plan you should clearly mention that this project is funded by Pakistan-U.S. Alumni Network and US mission. And, with due respect, I would like to add for my alumni, fellow alumni, that कि जो आपके जो project goals हैं और objectives हैं, they should be short and crisp, and they should be very much specific to the problem you are addressing, because this is a short summary of your project. And make sure, because this is your what we can say like the pitch speech आपकी हो गई जिस तरह से जो आप जिसको जो है present करते हो. तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आप उसको क्लियरली डिफाइन करें. दीज आर द टिप्स जिसकी वजह से आपके जो मैसेज है हमारे तक क्लियर पहुंचेगा और आपकी स्मॉल ग्रांट के एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट यू वांट टू डू. थैंक यू.
Thanks, Ashok, for clearance. Then for monitoring and evaluation, you have to plan that how you are going to measure your success and project sustainability, overall impact of your project. And next, Madhya, please. And in next step, step 6, it's project key personnel. If you're going to involve any human resource or any security persons, you have to write your all the details over here. In next slide, you will see, Madhya, next please. You can see there is a pop-up will appear if you want to add human resource or any security clearance or any other security related thing. You have to add their CVs or consent letter from those persons. And next we have project key person. Yes, if we are going to add or any organization or partner to share cost in our project, we are going to add the details of that organization or partner over here. You can upload here NOC from them, their consent letter or MOU. And next, please. In steps. One thing I want to explain, be careful about the formats while uploading MOU document, consent letter and NOC. Only PDF document is supported और हर जगह पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे PNG supported है, कहाँ पे PDF है, तो be careful about the format वरना फिर errors आएंगे तो step forward नहीं होगा फिर. Thank you. Next is project work plan. Here you are going to add details week-wise. First week में आपने क्या करना है, second week में आपकी क्या details होंगी, trainings or other sessions. And similarly, you can go up to your end of project, 8 weeks, which is time duration. And next, please, Madhya. Project budget. Yes, this is important. Basically, the budget is a numeric summary of your overall project. And so here you can see there are approved items in which you have to relate your every estimated expense of your project. And similarly, for example, if we want to add rent, you can see the venue budget, you can add rent expense over there. Similarly, you can see other expenses too. And I want to mention one thing here. If there is any kind of cost sharing from any organization or any partner, you can write it over here. You can see the table down below in the screen. And in any in-kind contribution, you can simply enter the approved budget head, that is venue. If you want to enter share cost or in-kind contribution in venue budget or in food budget, in travel budget, you can simply click that add button and enter the figures there, and they will appear in the table. Next, I would like to add one thing, Mushfat, related to the basically collaborations that you have mentioned. I would also like to request and would suggest that it's always good. Sometimes हमारा जो project का scope होता है वो budget से out हो रहा होता है, but we want to do more and we have lesser resources. So we always encourage if you bring in collaborations and synergies with different organizations that can help you out in different ways. Like अगर आपको कोई एक अच्छा venue मिल रहा है, you can save that venue cost and you can use that cost in better services that your small grant is providing. So make sure कि आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपने आपको जो बजट मिला है आपने उसी के अंदर ही अपना स्कोप कर लेना है जो लिमिट है. मे बी स्काई इज द लिमिट ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोप जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है इफ यू हैव कोलैबोरेशंस, सो वी इनकरेज दैट. सो दिस इज द कॉलम दैट मुशफत हैज मेंशन कि आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, so you can always write their details and their name as well. Thank you. Thank you, sir. Next, please, Martin. So the step 9 is project upload. Here you will upload 1-minute video, and Madhya will explain you about this video. Madhya, can you explain how? वीडियो 1 मिनट 60 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उसका मैक्स साइज गिवन है, मैक्स साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एक शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होंगे कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू. अपनी बैंक उसके बाद आपने अपलोड का बटन जो है वो क्लिक करना है ताकि आपकी जो आपने अपलोड चूज अ फाइल से वीडियो अपलोड की है वो सेव हो जाए. उसके बाद आपने अपनी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देनी है और सेव बैंक इन्फो पे क्लिक करना है ताकि आपकी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन सेव हो जाए.
नेक्स्ट आपने लास्ट में अंडरटेकिंग को चेक करके अपने सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। ये सिग्नेचर्स जो हैं आपके इमेज फॉर्मेट में होने चाहिए, PNG और JPG फॉर्मेट में, नो अदर फॉर्मेट इज सपोर्टेड। और तो ये आपने इस तरह से करना है और फाइनली क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल बटन टू फाइनली सबमिट योर प्रपोजल। राइट माधिया, और मैं आप लोगों को 60 सेकंड वीडियो के बारे में कुछ और बताता चलूँ। दिस इज़ वन फेयर चांस कि आप अपना आइडिया जो है पिच करें। समटाइम्स जो होता है, हम जब हम कुछ राइट करते हैं तो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारा आइडिया क्या है या व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। सो मेक श्योर दिस इज द बेस्ट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस 1 मिनट वीडियो, जिसमें आप पूरा हमें बताएंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में करना क्या चाह रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्पेंड मोर टाइम on your objectives and implementation, कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को करेंगे, rather than आप सिर्फ जो है प्रोजेक्ट के टॉपिक को एक्सप्लेन करने में 1 मिनट लगा रहे हैं। So take it very important कि जो आपकी 1 मिनट की वीडियो है, that's a business pitch kind of a thing, जिसमें आप अपने प्रपोजल को पिच कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। और एक और चीज़ बताता चलूँ, सॉरी मादिया, एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग जब अपनी बैंक डिटेल्स देंगे तो मेक श्योर वो आपकी पाकिस्तान की लोकल बैंक डिटेल्स हो, वन थिंग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुशफिक, बिकॉज यू आर द फाइनेंस पर्सन। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो वैलिड होना चाहिए और आपके नाम पे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये स्मॉल ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो अमाउंट है जो स्मॉल ग्रांट की, अगर इफ इट्स सेलेक्टेड और आपको जो अमाउंट आएगी 80% जो होती है आपको एडवांस देते हैं, वो आपके अकाउंट में आएगी। तो मेक श्योर कि आपका अकाउंट हो, दूसरा कि आपका रनिंग और जो है एक्टिव अकाउंट हो, लोकल बैंक अकाउंट। If there's anything else, Mushfat, you can please add as per the financial Make sure perspective. that account details are correct, your branch code, your address, your title. Otherwise, it will cause very trouble for us and you too. राइट। और जो डिजिटल सिग्नेचर की बात की है मिस मादिया ने, उसमें ये है कि आप बेशक आप अपने सिग्नेचर को क्लियर वाइट पेज के ऊपर ब्लैक बॉल पेन से साइन करके उसकी पिक्चर ले लें और उस पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप करके अपलोड कर दें। तो दैट विल मेक योर डिजिटल सिग्नेचर। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट योर सिग्नल डिजिटली इनटू समथिंग, इट कैन बी जस्ट एन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर्स, बट मेक श्योर वो क्लियर हो और वो इमेज हो जो आप रेगुलरली अपने यूज करते हैं आईडी कार्ड्स और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे। थैंक यू, ओवर टू यू गाइस। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर जब आप बैंक इंफॉर्मेशन सबमिट कर देंगे और सेव कर देंगे और ये प्रपोजल सबमिट हो जाएगा, तो आपकी बैंक इंफॉर्मेशन, आपकी वीडियो, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स ये अनएडिटेबल हैं। आप इसको बाद में एडिट नहीं कर सकते। आपका प्रपोजल आपको कमेंट्स के साथ वापस आएगा कि आप बजट में चेंजेस कर लें, आप प्रपोजल में चेंजेस कर लें, लेकिन आपकी ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं ये चेंज नहीं हो सकती। तो इफ अगर ये गलत एंटर हो गई हैं तो फिर ये बाद में मसला बनेगा। सेकेंड थिंग इज कि ये सारे स्टेप्स जो हैं ये जरूरी नहीं है कि आप 1 गो में बैठे और 1 गो में स्टेप 1 to 10 आप कंप्लीट करें। आप 1 2 3 4 स्टेप्स एक बार कर सकते हैं। आपको कोई काम है, आप लॉग आउट कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं मिला, आप कल आते हैं, विद इन डेडलाइन आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप डेटा सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करके अपने प्रपोजल को एडिट कर सकते हैं और फाइनली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार प्रपोजल सबमिट हो गया उसके बाद एडिटिंग के चांसेस नहीं है। दैट्स इट। ये लास्ट स्क्रीन है जो अपीयर होती है जब प्रपोजल सबमिट हो जाता है, और एक ईमेल नोटिफिकेशन आपके ईमेल इनबॉक्स में आएगा कि आपका प्रपोजल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, जो इंडिकेशन है कि आपका प्रपोजल आपने सबमिट कर लिया है सक्सेसफुली। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन राइट अस एट asc@uscfpakistan.org, और कोई टेक्निकल आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट अस एट info@pon.pk एंड वी विल डील विद योर क्वेरीज। थैंक यू। थैंक यू मादिया। हम जो ये प्रपोजल रिलेटेड क्वेरीज और जो टेक्निकल सपोर्ट क्वेरीज के लिए जो ईमेल आईडीज हैं, वी आर पोस्टिंग इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा वी आर गोइंग टू पोस्ट जो इस साइकिल की जो करंट थीम्स हैं, ओपन और स्पेशल थीम्स जो हैं, वो भी हम उसमें कमेंट सेक्शन में, यू कैन ऑलवेज सी दैट कि किस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वी आर ओपन टू इट। और आपको ये बताता चलूँ जो करंट साइकिल है वो अभी एक्टिव है जुलाई के मंथ में, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है वो ये साइकिल चलेगा। सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई ऑन दैट, कीपिंग इन व्यू जो इस सारा प्रोसेस बताया हुआ है। तो इट्स जस्ट अ टिप,
और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं अभी कमेंट सेक्शन से उठा के आई एम गोइंग टू रिप्लाई देम। कुछ है कि किसी ने क्वेश्चन किया, कैन न्यू पीपल who have recently joined PUAN are eligible to apply? जी बिल्कुल, for you are very much eligible to apply, लेकिन इसका prerequisite ये है, you have to be registered on the database. जो PUAN database है उसका भी लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप अप्लाई करेंगे। When you are a registered PUAN member, I repeat, if you are a registered PUAN member, then and only you can apply for a small grant, because उसके अलावा जो है आप पोर्टल जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। So make sure you are a registered PUAN member, आपके पास सब डिटेल्स होंगी रजिस्ट्रेशन और PUAN की। उसके अलावा कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो जिस तरह से मादिया ने जो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ईमेल आईडी बताया, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग द अदर क्वेश्चन, जी Mushfat, if there's a question that is, what is meant by routing number in the account section? Routing number is basically part of account number. You can simply write your account number in that section, routing number. ठीक है, that's an optional Yes. thing that you can add, but make sure कि आपका complete account number और branch code जरूर हो। Yes, please write your complete account number, which is mentioned on your checkbook or leaf of your check at the bottom. It includes routing number. Okay, the next question is by Sana Ehsan. If someone wants to organize seminar, is it possible, and do we have to seek consent letter of our host? Sana, as much as I have understood your questions, if it's related to your small grant, कि आप ऑर्गेनाइज सेमिनार करा सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर स्मॉल ग्रांट। अगर आप कोई सेशंस करा रहे हैं, एजुकेशनल सेशंस हैं या कुछ भी कम्युनिटी सर्विस सेशंस हैं, या आपकी स्मॉल ग्रांट इज लाइक इज फॉलोड बाय अ सेमिनार जिसमें आप छोटी एक्टिविटीज के बाद आपने एक बड़ा एक सेमिनार कराया, तो उसके लिए आपको चाहिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखी हैं। यू हैव टू सी द वेन्यू, कि वेन्यू जो है वो सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं या आपके फेलो अलुमनाई आते हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि इज इट सिक्योर फॉर द पीपल हु गोइंग टू अटेंड द सेशन या सेमिनार। उसके अलावा आपने ये देखना है कि इज इट फिजिबल, कि मतलब रीचेबल है सबके लिए कि नहीं, कि आपको लगे कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस जो है, जो आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो आर इन अ क्लस्टर जो बहुत दूर है और आप अकेले एक साइड पे हो। तो मेक श्योर दैट योर वेन्यू इज वेरी मच easy and comfortable for everyone, keeping in view the security measures. Will you give extension to deadline for submitting proposal? I'm sorry, we are very strict on the deadlines, क्योंकि it's 1 month is a great time कि आप जिसमें आप अपने ideas जो हैं you just jot them down और उनको jot के आप फिर उनको refresh कर लें या आप उनको organize कर लें और या आप उसको most probably more focused कर लें. So I'm sorry, we are very strict on the deadlines for the proposals. तो अभी आपके पास whoever has asked this question, अभी आपके पास बहुत time है. It's 18th, 12 days are fair enough. If by any chance you miss this opportunity, you can always apply in the next cycle. So उसके अलावा है where I see details post about previous grants of previous cycles to have an idea. अच्छा जी, हमारा एक blog page है PUAN का, तो आप वो भी मैं कमेंट सेक्शन में जो है वो पेस्ट कर दूंगा, आप उस पर जाके देखेंगे तो यू विल सी some inspirational and phenomenal work done by the other alumni in the community, और बड़ी अच्छी उन्होंने small grants की हैं। So बेहतर है, it's a very good question, you can see, you can get inspired, और फिर आप उसको देख के you can come up with some innovative idea, और इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। Ashraf, I want to add here, I have seen a question related to bank details. The question is, I don't have any organization in my name. I think there is misunderstanding. You have to write account details of your own. The person who is applying for small grant. Your bank details should be, the bank account title should be on your name, not any organization name. It should be your personal account, not the account of your any friend, neither your brother, sister, any sibling. It is not mandatory that it should be an organizational account. It should be on your own name, on the name of the grantee. Thank you. I think it's clear. Thank you, Mushfat, and I can branch another question out of it. इससे एक और question भी बनता है कि I don't have any organization in my name. Can I still apply? Yes, you can apply. आप individually भी apply कर सकती हैं, या कर सकते हैं अपनी small grant, या अगर आपकी कोई organization registered है, आप उसकी base पे भी कर सकते हैं. Totally depending on what you want. उसके अलावा जी आई वुड लाइक टू रिपीट, और कमेंट सेक्शन में भी शेयर करूंगा, PAK-US alumni network.org है. इफ यू जस्ट लॉग इन टू इट, आई रिपीट, PAK-US alumni
alumninetwork.org ये ब्लॉग है, इस पे आप जाके जो है वो देख सकते हैं डिफरेंट जो है स्मॉल ग्रांट्स हमारी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर व्हिच वी अप्लाई अंडर ASG? जी मादिया, वुड यू लाइक टू आंसर टू इट? 16 weeks 4 आपकी months. max duration 16 weeks ठीक है होनी चाहिए। जी, इट्स अ 4 आपने months। duration जी जी 4 जी months आ है, जाए। लेकिन आपने in terms of weeks ऐड करनी है अपनी duration। ठीक है, दिस इज अ वेरी टेक्निकल आंसर दैट मादिया हैज गिवन। मादिया, वुड यू लाइक टू रिपीट? नॉर्मली जो स्मॉल ग्रांट का जो टाइम होता है वो 4 months होता है, बट आप जब MIS में ऐड करेंगे वो आप एज पर वीक करेंगे, और मादिया आपको बताएंगे कितने वीक्स है। 16 weeks मैक्स लिमिट है, इसके अंदर आप 14, 12, 11, 13 जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, 16 से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अलाउ नहीं करेगा आपको रूल्स। और इन टर्म्स ऑफ वीक्स ऐड करें अपने ये 1 month या 2 months, अगर आप 1 या 2 लिखेंगे इट मींस 1 week और 2 week प्रोजेक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ वीक करें, वहां पे बड़ा क्लियरली नोट मेंशन है कि आपने टर्म्स ऑफ वीक अपनी ड्यूरेशन ऐड करनी है। ठीक है, और मैं आपको बताता चलूँ रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द स्मॉल ग्रांट कि द मैक्सिमम लिमिट इज 4 months। डोंट थिंक कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है आपने उसको 4 months तक खींच के जाना है। आपका प्रोजेक्ट जो है, इफ इट मेक सेंस, वो 1 हफ्ते में भी खत्म हो सकता है, 10 दिन में भी खत्म हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, और उसको ऑब्वियसली यू हैव टू जस्टिफाई इट कि आप उसको उस टाइम में कर सकते हो कि नहीं, बट द मैक्सिमम स्ट्रेच दैट यू कैन हैव इज 4 months। 4 months के अंदर आपने पूरा अपना प्रोजेक्ट जो है वो रैप अप करना होता है। और उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि कुछ जो क्वेश्चंस था किसी का कि हम और जो अलमनाई की स्मॉल ग्रांट्स हैं, हाउ कैन वी सी इट एंड वेयर वी कैन फाइंड इट। One, I've told you that we are going to, you can just see the PUAN blog and you'll have very inspirational stories. Apart from that, we are having a third live session on July 25th at the same time, 3 p.m. July 25th, I repeat, जिसपे हम जो है previous cycle के जो grantees हैं, जो successful grantees हैं, we will invite them, और वो आपके साथ एक सेशन करेंगे जिसमें वो आप लोगों को टिप्स बताएंगे that how they scored their grants, what inspired them and how they implemented them. So this is one fair chance of you to directly ask and question the people who have secured the grant. So I would repeat, don't miss that opportunity, July 25th, 3 p.m. Or for general insights, I would say visit our Facebook page and see the recording of first session about introduction to ASGs on July 7th. तो आप जब PUAN के पेज पे जाएंगे, Pakistan-U.S. Alumni Network के Facebook पेज पे, just scroll and check the date of July 7th, और उस पर आप जाके देख सकते हैं 7 जुलाई को हमने एक सेशन कराया था कि इंट्रोडक्शन टू ASGs। इफ यू आर नॉट रियली क्लियर कि ASGs क्या है, ASGs स्टैंड फॉर अलुमनाई स्मॉल ग्रांट, यू कैन गो टू दैट सेशन एंड आप उसको आप आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन गोल्स ऑफ द अलुमनाई स्मॉल ग्रांट। और आप वीडियो भी जो है वो वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी हम सेशन करा रहे हैं इससे पहले हुआ है, जो इसके बाद होगा, all these recordings will be on the Facebook page and you can always access them to have a reference or to get an idea. And I've got one question and it says age factor, age limit in order to apply for grant. So just to be clear on that, there's no age limit to apply for alumni small grant. The only prerequisite that we discussed is that you should be a registered PUAN member on the database and you should have valid bank details, and the bank details should be in Pakistan. आपका जो पाकिस्तानी local bank account है, it should be active bank account. These are one of the prerequisites. Age is just a number for us. If you can apply a small grant in any age, unless the idea is brilliant, because when you have to make a change in your community, it does not matter how old are you or how, it doesn't matter what appearance you have or anything like that. So apart from that, Madhya, I would request a little simple questions. So आपके लिहाज से जो common technical errors या जो कुछ issues जो on the basis of your previous experience, and I'll come back to come over to Mushfat as well. तो आपको क्या लगता है, what is the information या क्या step है जिस पे alumni जो है वो miss कर जाते हैं and there is a technical difficulty? टेक्निकल डिफिकल्टी जो ज्यादा आती है और जिसके बारे में ज्यादा क्वेरीज हमें आती हैं info@pond.pk पे, जब आप गलत फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वैलिड फॉर्मेट PDF कहा हुआ है वहाँ पे आप PNG अपलोड कर रहे हैं या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं,
और आप वो नहीं पढ़ रहे कि ये PDF है। और जहाँ पे PNG में सिग्नेचर्स मांगे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि लोग अपने सिग्नेचर्स का स्कैन PDF में डाउनलोड करते हैं और फिर वो PDF अपलोड बार बार करते हैं और सिस्टम एरर शो कर रहा होता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आपका जो डेटा है वो जब आप अपडेट करते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ, तो आपका जो टेक्स्ट फील्ड में डेटा है उसमें आपका बहुत प्रिसाइज आपका आंसर होना चाहिए। जब आप वर्ड लिमिट से, ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं इनको लोग कंफ्यूज करते हैं करेक्टर लिमिट और वर्ड लिमिट में। हमने यहाँ पे करेक्टर लिमिट यूज किया हुआ है, वर्ड लिमिट नहीं यूज किया हुआ। तो अगर आप PUAN भी लिखते हैं तो PUAN 4 करेक्टर्स की स्पेस आपकी चली गई है, ठीक है। ये एक नहीं गया, एक वर्ड नहीं गया, ये 4 करेक्टर्स चले गए हैं। तो ये है कि, और हमने वहां पे काउंटर लगाया हुआ है कि आप जैसे जैसे टाइप कर रहे होते हैं बैकवर्ड काउंटिंग में काउंटर चल रहा होता है कि आपकी इतने करेक्टर लिमिट रह गई है। लेकिन ऑब्वियसली आप ज्यादा फिर जब लिख सकते हैं तो फिर आप सेव करेंगे तो फिर एरर आएगा वेबसाइट पे। So यू आर be वेरी careful. राइट मादिया। हाँ, सो इसको आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने, जब आप करेक्टर लिमिट, आई रिपीट, जिस तरह से मादिया ने कहा, करेक्टर्स आर द लेटर्स बेसिकली, अल्फाबेट्स, राइट? Yes. डोंट कंफ्यूज इट विद द वर्ड्स। और तो इट्स अ बेटर सजेशन कि अगर आपने देख लिया है कि किसी हेडिंग के अंदर 500 लिमिट है, इट्स बेटर कि आप वो जो है 500 लिमिट के जो भी है आंसर जो है वो आप वर्ड में टाइप कर लें, ताकि आपको चेंजेस में आसानी और बार बार आपको बैक एंड फोर्थ ना जाना पड़े MIS पे। व्हेन यू सी द लिमिट इज 500 या उसके अंदर है, तो आप वो कॉपी पेस्ट करके वहाँ अपने पोर्टल पे अपलोड कर दें। मूविंग फॉरवर्ड टू अ टेक्निकल क्वेश्चन, मादिया, आई कम टू यू अगेन। The question is, do we need to fill full application form in one sitting, or we can save our progress and work on it in batches? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये आप स्टेप बाय स्टेप डेटा अपना सेव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं, तो आपको वन सिटिंग में इसको फिल करने की कोई वो नहीं है। आप, क्योंकि इट्स अ लेंथी फॉर्म और इसमें बहुत डिटेल्ड आंसर्स भी बहुत जगह पे चाहिए और वीडियो चाहिए, तो ये वन सिटिंग में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसीलिए 1 मंथ की डेडलाइन है। बस आप डेडलाइन का ख्याल रखें, लेकिन आप इसको मल्टीपल सिटिंग्स में कर सकते हैं इजीली। आप हर स्टेप पे डाटा बस सेव करें अपना और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें और उस स्टेप को स्टार्ट ना करें और छोड़ दें वहीं पे, फिर वहां से नेक्स्ट सिटिंग में आप कर सकते हैं। ठीक And है। for financial perspective, I just want to add here, try to make your budget a little bit realistic. And for bank details, enter them correctly by matching them with your account records and checkbooks. That's it. ठीक है। और मुशफ़त, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट के जो बजट, जब सबमिशन जो वगैरह होती हैं, तो क्या क्या मतलब रिसिप्ट्स का भी अगर आप थोड़ा सा बता दें। At the time of closing, yes, if you get approval of your small grants, and we will transfer you funds on the closing of small grants project. At the time of closing, we mostly see that the receipts are usually not clear, not readable, or they don't have proper, you can say, proper stamped properly, or they are not authentic. We check the authenticity of the receipts and invoices. So please make sure you provide original receipts with clear references, dates, and amounts that are easy to read. Right. Thank you, Mushfat. Very common problem, Madhya. I would like you to tell our audience as well कि normally जब आप लोग जो login कर रहे होते हैं कुछ alumni, because कुछ लोग काफी अरसे बाद login करते हैं and they forget their passwords. So normally they have a complaint that their password is not retrieved. तो वो आप उनको बता दें कि अगर वो forget password करते हैं तो what are the tips that they have to follow? बस मेक श्योर कि आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने एंटर की है वो करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अनाउंस होती है तो सर्वर पे लोड आ जाता है, सर्वर बिजी होता है, जिसकी वजह से ईमेल्स नहीं सेंड होती। आप थोड़ा वेट करें, 3 to 4 आवर्स वेट करें या हाफ डे वेट करें कि आपको फॉरगॉट पासवर्ड की ईमेल आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती, आप info@puan.pk पे हमें ईमेल करें, हम आपको आपका पासवर्ड इनबॉक्स करेंगे। तो क्योंकि जब जी तो प्लीज। अपॉर्चुनिटी आती है तो हम भी काफी एक्टिवली ईमेल्स का, क्वेरीज का रिस्पांस कर रहे होते हैं और सर्वर भी काफी बिजी होता है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। तो ये इशू है जिसकी वजह से ईमेल्स कभी स्ट्रक हो जाती हैं या क्यू में हो जाती हैं। और ऑलवेज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। और जहां जब भी आप info@ या no reply@puan.pk से ईमेल आपको मिले स्पैम या जंक में, तो आप उसको मूव टू इनबॉक्स कर दें। तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो ईमेल है हमारे एड्रेस से जो भी आएगी वो आपके मेल बॉक्स में डायरेक्टली आया करेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
वेरी वैलिड पॉइंट माधिया। और दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि नॉर्मली इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सके डेडलाइन से पहले, लाइक एटलीस्ट हैव अ मार्जिन ऑफ 3 to 4 days, कि आप Yes. अपनी सबमिट करा दें प्रपोजल। क्यों? क्योंकि नॉर्मली व्हेन द डेडलाइंस आर क्लोज वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज, और जो होता है लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट द IT teams would normally take at least 24 hours to reply to your queries. So make sure कि आप last day अपनी query ना भेजें and then you regret that your small grant is not submitted. तो make sure कि आपकी जो जितने भी queries problems हैं 3 to 4 days minimum या एक week पहले आप भेज दें, कोई technical difficulty है वो solve हो जाए। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और एक और क्वेश्चन ले लूँ मैं जी। क्वेश्चन आया जी, एनी स्मॉल ग्रांट अवेलेबल रिगार्डिंग हेल्थ इमरजेंसी इश्यूज? So Munir, I would just, as I have mentioned, there are two kinds of small grants: open themes and special themes. अगर आपको लगता है कि स्पेशल थीम में जो है यूएस मिशन ने अनाउंस किया है दैट हेल्थ इंटरेस्ट या इस टाइप की कोई स्पेशल थीम है जिस पे आप स्मॉल ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अप्लाई ऑन द ओपन थीम्स। ओपन थीम्स पे आप कोई भी टॉपिक फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सोसाइटी एंड यूएस मिशन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए यू कैन अप्लाई ऑन दैट। दैट डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। आई रिपीट, ओपन थीम्स जिसमें हम लोग 500,000 रुपीज 5 लाख तक की स्मॉल ग्रांट देते हैं। उसके अलावा आई वुड लाइक टू आस्क मुशफत, और मुशफत जो बजट रिक्वायरमेंट्स हैं जिस तरह से आपने बताया है, तो थोड़ा सा आप एम्फोसाइज करेंगे कि आइडियल बजट रिक्वायरमेंट्स पे आप जो उनको क्या कहना चाहेंगे, पता लगना है कि बजट को किस तरह से। जस्ट ये क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपने स्लाइड पे हमने मेंशन किया था देयर आर सम अप्रूव्ड हेड्स वेन्यू supplies and etc. So just make sure that your planned expense should be under that major approved item. अगर रेंट है तो वो वेन्यू कॉस्ट में जाना चाहिए। देयर bifurcation is there, every expense is mentioned in detail over there. So आपको उस पे रिलेट करके उसमें आप एज अ प्लान वो बजट डालें ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। फिर वो देखते हैं आइदर इट इज रियलिस्टिक और नॉट, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आपके अप्रूव्ड हेड्स के अंदर वो सारी कैटेगरीज आ जाए। True, and I will add to it कि since आप देख रहे हैं कि यहाँ पे inflation in everything that is happening around, so it's a suggestion कि आप अगर small grant apply कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों के rates जो हैं वो market में check कर लें, if you know what you have to do. For example, आप कोई hall booking करा रहे हैं या if you're going for something like that, so make sure कि आपके पास rough idea हो. You don't want the specific हो, ये ना हो कि आपको कल को आपको कोई पुरानी फिगर याद हो किसी चीज़ की 2 महीने पहले, if you went on an event and you know about the hall that it was charging this month, जब आप अप्लाई करें तो उसके रेट चेंज हो जाएं। तो मेक श्योर कि यू शुड हैव अ लिटिल फेयर नॉलेज। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी कोई स्मॉल ग्रांट अप्लाई करें, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग R&D। एंड R&D डज नॉट मीन दैट यू हैव टू डू अराउंड द टॉपिक, और जो कोई चीज़ टॉपिक है, मेक श्योर कि जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस हैं आपके स्मॉल ग्रांट की, मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव इन दैट एज वेल। और दूसरा ये है कि एज आई मेंशन दैट डॉलर रेट्स आर फ्लक्चुएटिंग डे बाय डे, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लिटिल कुशन। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज की प्राइस 20 रुपीज है तो कीप अ क्वेश्चन ऑफ 5 रुपीज, आप उसको 25 कोट कर दें। देखिए कम हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ लेसर इज स्पेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव स्पेंट मोर देन व्हाट यू रोट इन योर स्मॉल ग्रांट, देन इट्स गोना बी इशू फॉर यू, बिकॉज आपके जितने भी अप्रूव्ड बजट है उससे आपको 1 रुपये भी ऊपर नहीं मिलेगा। So that's why always keep a cushion. Don't give straight figures. Always keep a margin of some amount so that कल को कोई flexibility होती है तो you can always keep it. Yes, and if your small grants gets approved और जो आपके बजट हेड्स अप्रूव हैं आपने उनमें मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ योर रेंट एक्सपेंस इज 50,000, you cannot add other line item, other amount of line item in that rent cost. So please make sure कि during the execution of your project आप head की cost को move ना करें। इसलिए आपको ये भी बताते चलूं कि हाँ नेक्स्ट आप फिर वो मूव कर भी नहीं सकते हेड की कॉस्ट। सो मेक श्योर योर फिगर्स आर वेल रिसर्च्ड एंड दे आर रीजनेबल एंड रियलिस्टिक। उसके अलावा आई विल जस्ट go to Madhya, then Mushfat, like the final tips so that we can wrap this session. And with that, because I have answered all the questions, if there's any other question, please write in the comment box. We'll reply to you. Even the session is off, we'll reply to you in the comment section.
Last tip, Madhya, if you want to give. टेक्निकली स्पीकिंग आप डेडलाइन से 3-4 डेज पहले, जैसे अशर ने कहा कि करें. सर्वर लास्ट डेज में काफ़ी सारा बिजी होता है, कोई वीडियोस अपलोड करें, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जिसकी वजह से ईमेल सेंड नहीं होती, कुछ लोग लॉगिन की ट्राई करें, और ये एक लेंथी प्रोसेस है. एक मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आपके प्रपोजल में. तो एक दिन में या 2 दिन में या लास्ट वीक में ये नहीं हो पाएगा. और एक ऐसा प्रपोजल भेजना जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इससे बेहतर है कि फिर वो ना भेजा जाए. तो 1 मंथ की डेडलाइन है. उसको टाइम को देख के आप इसको डिफरेंट सेटिंग्स में, मल्टीपल सेटिंग्स में करें और इसको सबमिट करें. दूसरा, अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि फॉर्मेट का जो है वो खास ख्याल रखें. अपना MOU, NOC जो आप अपलोड कर रहे हैं और अपने सिग्नेचर्स अपलोड कर रहे हैं, सब पे वैलिड फॉर्मेट्स दिए हुए हैं. 60 सेकंड्स या 5 MB से ज़्यादा की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं करेगा सिस्टम जो है वो बार बार एरर मैसेज थ्रो करेगा. तो ये मैं अभी से बता रही हूँ कि अगर आपने 60 सेकंड या 5 MB से ज़्यादा की वीडियो की तो उस पर आपको एरर आएगा, और आपने उसकी फिर MBs कम करने हैं, दोबारा ट्राई करनी है, फिर MBs कम करने हैं, दोबारा ट्राई करनी है, तो वो हो जाएगी. और फॉर दैट देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स एज वेल. तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एज पर द नीड ऑफ साइज भी कर सकते हैं. फ्रीलांस जो है, ओपन सॉफ्टवेयर जो आपकी जो इंफॉर्मेशन एक बार सबमिट हो जाएगी तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जैसे बैंक अकाउंट है, सिग्नेचर्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकेंगे बाद में, और ये बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और फिर हमारे लिए भी, अगर उसमें से कुछ चेंज करना होगा. और एक ईमेल नोटिफिकेशन आपको आता है जो एक कंफर्मेशन है कि आपका प्रपोजल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. तो आप जब भी प्रपोजल को सबमिट करें तो मेक श्योर कि आपको वो ईमेल नोटिफिकेशन आया है आपके मेल बॉक्स में. अगर नहीं आता तो आप हमें info@pwan.pk पे लिख सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपका प्रपोजल हमें सबमिट हुआ है या किस वजह से सबमिट नहीं हो पाया. तो ये टिप्स अभी मेरे माइंड में आ रही है. Okay, thank you. Or lastly, from financial perspective, just try to make your budget realistic on the basis of current situation, inflation, and if you are really keen to do any project, we have also option of cost sharing and in-kind contribution. You can also add these in your submission of budget. Thank you, Mushmat, and I will just quickly wrap up the session. कुछ points जो हैं वो ज़हन में रखिएगा. One, that technically आपको जो registered होना पड़ेगा PUAN की database पे, right? You should be a registered alumni. Secondly, आप check कर लें कि cycle कौन सा चल रहा है, उसकी deadlines क्या हैं, themes क्या हैं. If you are interested in open themes जो 5 लाख रुपए में, you can do that. और जो special themes हैं that are for 10 लाख, आप उस पर apply कर सकते हैं. Then you make sure that you have a valid bank account, और जो local bank account हो आपका. Please make sure your budget is realistic, और हमेशा अपने estimate का cushion रखना है, as I've mentioned and we have mentioned that. Apart from that, make sure कि आप fellow alumni से बात करें, get an idea, discuss an idea, do a proper research. आप blogs पे देखें क्या क्या चल रहा है हमारा, you'll get an idea, and make sure your idea is unique. Lastly, if your idea is rejected, don't worry, you can always try again. There's always a better opportunity, better chance. So don't get upset because there are different ideas coming from all around Pakistan and the competition has become so tough. So it does not mean कि आपकी जो idea है or your proposal is not worth it. It's just like something better has popped up, और या आपकी कोई technical difficulty या कुछ आपने budget में इस type की mistake कर दी है. So with that, I would like to thank Mushwat, Madhya, for being here and enlightening us on the technical and financial aspects of the Alumni Small Grant. With that, I would like to thank every one of you who has attended this session. Who has not, the recording will be uploaded on our Facebook page, and make sure you join in for the next session that is going to be on 25th July, same time, 3 p.m. That will be about the previous cycle grantees who will give you better tips how to apply a small grant. Thank you very much. अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिएगा. Have a good evening, everyone. Thank you.